In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, today in the morning spoken English class, we're going to start some very valuable reductions. Now, first of all, in today's lecture, we'll try to understand what are the reductions all about. Reductions के हवाले से reduced करके बोलना, contract करके बोलना, मुख्तसर हालत में बोलना, this is really an important task in spoken English in particular. आप जरा ये सेंटेंस बोला था करें फर्स्ट. आई हैव गॉट टू गो टू द स्टोर आफ्टर वर्क. आई हैव गॉट टू गो टू द स्टोर आफ्टर वर्क. देखिए कितने वर्ड्स को हमने एक वर्ड में आई हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. कॉन्ट्रैक्शंस की आई गॉट टू गो टू द को गॉट टू गो टू द गॉट टू गो टू द आई गॉट टू गो टू द स्टोर आफ्टर वर्क. गॉट टू गो टू द जैसे लगे जैसे एक ही वर्ड है. अदरवाइज got to go 3, 4, 5 words हैं. They have been reduced. Gotta go to the work. Gotta go to the store after work. So इस तरह से sometime ये connected speech भी कहलाती है. जब आप connect कर देते हैं बहुत सारे words को, connected speech या linking words के हवाले से कुछ exercise है. इस पर हम काम करेंगे later on और आपको एक मुख्तसर एक lecture भी देंगे उसके हवाले से. हमारे पास जो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इसको, when an English speaker shortens और eliminates particular sounds, कुछ जब आप पंजाबी में भी ऐसे ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसे, उर्दू में भी ऐसे, बहुत सारे वर्ड्स को आप रिड्यूस कर देते हैं, कुछ शॉर्ट करते हैं, कुछ एलिमिनेट कर देते हैं, मिटा देते हैं, ख़त्म करते हैं पर्टिकुलर साउंड्स को, तो फिर आप क्या करते हैं, यू रिड्यूस द साउंड, यू यूज रिडक्शंस. और ये क्या होता है, इनफैक्ट हमारे से वजूद में क्या आती है, कनेक्टेड स्पीच. अब कनेक्टेड स्पीच मींस कि बहुत सारे वर्ड्स को मिला दिया जाता है. आप अक्सर परेशान होते हैं इंग्लिश स्पीकर्स को सुनते हुए, वो कनेक्टेड स्पीच की वजह से. हमारा IELTS का पार्ट जो 4 है उसमें भी जब एक इंग्लिश स्पीकर लेक्चर देता है उसमें कनेक्टेड स्पीच का बहुत इस्तेमाल होता है. जैसे अगर हाउ आर यू 3 वर्ड्स हैं, हाउ आर यू, ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर कनेक्टेड स्पीच वर्ड्स को, काफ़ी सारे वर्ड्स को इकट्ठे कर देना. रिड्यूस साउंड्स होती हैं या कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल होता है. ये क्यों करते हैं और हमें मतलब रिडक्शंस के हवाले से पहली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड फास्ट इंग्लिश स्पीकर्स ईजिली. आप सुनते हैं बहुत सारे इंग्लिश को बात करते हुए वो तेज़ी से बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन डे टू डे कॉन्वर्सेशंस आप देखती हैं, जब अगर आप कहीं उनको बोलते हुए देखें तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तेज़ बोल रहे हैं. नॉर्मली तेज़ बोलती हैं, हमारे प्रॉब्लम होती है. हम बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान से जब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है, वो बोल तो शायद थोड़ा सकते हैं लेकिन उनकी लिस्निंग उनकी कमज़ोर होती है या वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं. जब उनकी बात नहीं समझेंगे तो कैसे अपनी बात करेंगे, इससे कंफ्यूजन और हेजिटेशन का आगाज होता है. लिहाजा ये जो लेक्चर है इट्स गोना हेल्प यू इन मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग मोर और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिसनिंग टू इंग्लिश स्पीकर्स कॉन्वर्सेशंस में. और आप पॉडकास्ट्स देखते हैं या और इस तरह की उनकी गपशप होती है इंग्लिश में, तो उसमें आपको इन कनेक्टेड स्पीच का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. इसके बाद मोर नेचुरल साउंडिंग स्पीच इन इंग्लिश, और इसकी वजह से इंग्लिश स्पीच जो है ज़्यादा नेचुरल साउंड करती है. आप देखें इनकी वजह से रिडक्शंस या कॉन्ट्रैक्शंस के 2 बेनिफिट्स होते हैं या क्यों इस्तेमाल करते हैं. एक तो उनकी हम इस्तेमाल करेंगे फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए. फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे 4-5 वर्ड्स एक ही साउंड के साथ तो कनेक्ट होंगे, सेंटेंस वर्ड्स कनेक्ट होंगे, और जब वर्ड्स कनेक्ट करना सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बात कर सकते हैं. इंग्लिश फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है अपार्ट फ्रॉम फ्लुएंसी, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स को जैसे वो बोलते हैं उनके पैटर्न को समझ पाएंगे कि वो कैसे बोलते हैं. सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. नेटिव स्पीकर्स को समझना आसान हो जाएगा और फ्लुएंसी बढ़ेगी आपकी. उनकी फ्लुएंसी जिस अंदाज से बढ़ती है कुछ टेक्निक्स और टैक्टिक्स हम समझेंगे. सो हमारे पास आप देखते हैं जब इंग्लिश स्पीकर्स बात करते हैं मोर रेगुलरली, समटाइम दे ब्लेंड, समटाइम दे लिंक, समटाइम दे डिलीट,
और समटाइम्स दे चेंज साउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेंड करते हैं कुछ साउंड्स को आपस में, समटाइम्स दोनों को ब्लेंड या लिंक कर देते हैं आपस में। वर्ड लिंकिंग के बारे में मैंने आपको जिस बताया, ब्लेंडिंग और वर्ड लिंकिंग के बारे में हम लेक्चर पढ़ेंगे। फिर डिलीट कैसे करते हैं कुछ वर्ड्स को, वो भी हम देखेंगे। और जी टी फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंटली, और फिर चेंज करते हैं साउंड्स को। तो ये इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, टू लर्न लैंग्वेज इन द नेटिव स्टाइल। जब आप बात उनकी सुनेंगे नेटिव पैटर्न के मुताबिक, तो फिर आपको समझ भी अच्छी आएगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो फिर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लैंग्वेज में अच्छी बनेगी और आप खुद भी अच्छा बोल पाएंगे, फ्लुएंट और फास्ट इंग्लिश स्पीकर। सो कॉन्फिडेंट फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाना हमारा मेन मोटिव है। आपके हवाले से हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपसे फीडबैक भी लेंगे उनके हवाले से। गिव मी को आप गिव मी को गिव मी को क्या बोलेंगे? गिव मी, दीज आर 2 वर्ड्स। जब इनको रिड्यूस किया, रिडक्शन की क्या बनेगी? गिव मी। और दूसरा हमारे पास एक वर्ड है आज मी के साथ ही, लेट मी। 2 वर्ड्स हैं और इसको रिड्यूस करें, क्या बनेगा? लेट मी बनेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स, मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहाँ आपके लिए और बाकी एग्जांपल्स जो है वो आपसे हम आज लेंगे इंशाल्लाह। सो गिव मी अ पेपर एंड पेन प्लीज। गिव मी अ पेपर एंड पेन प्लीज। मुझे एक पेपर एंड पेन प्लीज दीजिएगा। जी, गिव मी। Can you give me some water? अच्छा, कैन स्टार्ट में, कैन यू गिव मी सम वाटर? कुछ मुझे आप पानी दे सकती हैं? A bottle of water, not a bottle of water. English sound में a bottle of water. Can you give me a bottle of water? Yes. Give me a big smile. Can you give me a big smile? क्या मुझे बड़ी मुस्कुराहट दे सकती हैं? शाबाश। Give me a second. Give me a sec. Sec कहेंगे सेकंड को। Give me a sec. मुझे थोड़ी देर दीजिए प्लीज। राइट, शॉर्ट कर दिया उन्होंने सेकंड को भी। ये डिलीट किया है उन्होंने, यहाँ पूरे सेकंड नहीं कहा। जैसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिटिल बिट को लिल बिट, लिटिल को पूरा डिलीट कर दिया उन्होंने, लिल रखा सिर्फ। तो ये बहुत सारी वर्ड्स ऐसे आएंगे जो हम साथ साथ बात करते रहेंगे उससे। शाबाश। Give me some break. Give me some break. मुझे थोड़ी सी ब्रेक दीजिए। Give me some break. Give me some money for shopping. Oh my goodness, you must be talking to your parents regarding it. Give me some money for shopping. She give me a beautiful rose. Shopping जैसे आया, अब जी को यहां से उन्होंने डिलीट किया है और इसको नहीं साउंड नहीं किया। जी, She give me a beautiful rose. she gave me, she gives me भी हो सकता है, she gives me हो सकता है, gives me, लेकिन हम give me की बात कर रहे हैं तो वो she के साथ नहीं। Give me a pen. Give me a pen, मुझे एक पेन दीजिए प्लीज। Give me a chance to prove myself. Give me a chance to prove myself. I want to show the world who I am. मैं कौन हूँ? All right. Give me a call when You are a genius of the Genius Institute, Claude. Give me a call when you are free. Give me a call when you are free. मुझे कॉल कीजिएगा जब मैं फ्री हूँ। आप He wanted to give me a gift. Sorry? He wanted to give me a gift. He wanted to give me a gift. Give me a guardian. Give me some guidance. Give me a paper ride. All right. Give me that pen back. Give me that pen back. Excuse me. Give me a good idea. Give me a good idea. Some space. Give me some space. Don't give me your good stuff. Don't give me your ill gestures. The translator give me his badge. Give me, वो gives me होना चाहिए था. Give me Give me some time to catch Give me my some breath. time to Catch my breath. catch my breath. Give me address of Genius Institute. All right, the address. Oh my, you already have it. Can you give me an example? Can you give me an example, Shabash? He has gave him refund. All right. Give me a glass of water. Give me a glass of water. Give me some time to eat. Give me some time to eat. If you can hear me, give me a sign. Give me Sign. a sign. Thank you very much. Very nice. Give me. And the next word is let me. Let me को बोलेंगे let me finish my coffee first. मुझे अपनी पहली कॉफी मुकम्मल कर लेने दीजिए, please. Let me write a letter. Let me write a letter. Let me write you a letter. पुरानी बात हो गई. ईमेल हो सकती है, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, SMS भी हो सकता है. Yes, please. Let me have some food. Let me have some food. Let me do the work. Let me do the work. Let me make a suggestion. Let me करने दो की सेंस में इस्तेमाल होता है. Let me give you a suggestion. मुझे आपको तजवीज़ देने दो. Let me finish my office work. Let me finish my office work first.
Let me read a book. Let me read a book. Let me show you a food trick. Okay. Let me find a recipe for you. Let me find a recipe for you for Chinese recipe or maybe Italian cuisine's recipe. Let me Right. think about your idea. Let me think about your idea. Let me help you. Let me help you. Very nice. Let me park the car. Let me park the car. Let me help you in the kitchen. Let me park the car in the garage. Right? Let me introduce the band to you. Let me introduce myself to you. I am something you don't know about me. Let me save you the trouble. Let me save you the Let me trouble. do the work. Let me do the work. Let me have some fun. Let me have some fun. Let me read the letter. Let me Read the letter. read the letter. Let me help you in cooking. Let me help you in the kitchen or cooking. Let me 5 minutes for thinking. Let me give me Let me 5 minutes for thinking. let me 5 minutes for thinking and arranging and making plan. Let me make own decisions. Let me make my decisions. Let me try and fix your car. Oh my God, let me try and fix your car. You're a helping hand. Very nice. Let me make a suggestion. Let me give you a suggestion. Let me save that trouble. Let me Save you in trouble. save you in trouble. Let me open the door for you. Let me open the door for you. Thank you very much indeed. These two contractions or reductions rather have been discussed here today in the class. It was very important lecture to begin with. We're going to have some more lectures entailing this one. We're going to have some more fun in language. Do you enjoy it? Yes. And it's a fantastic class, mashallah, and you have done a bit of work. You have given me sentences. It was your participation in the class as well. Wish you all the very best of luck. The genius of the Lead Genius Institute, Lahore. God bless you all. Take care of yourself and stay blessed.